Assalamu alaikum. So let's begin the session. So, Dr. Usman, you are going to be an examiner, and um, Sir Numan Tasneem, you are the candidate, right? Okay. Okay. Good evening, Dr. Noman. You have a 48-year-old female presented to with swelling in anterior aspect of neck. She complains of difficulty in swallowing and swelling move with swelling move with swallowing. And on she has no other symptoms, but it is swelling has started enlarging during last 5 years. How would you proceed with this case? Okay, so I have a patient, 48 years old, female who likely has a goiter as your description that the swelling moves with the deglutition. So I will start with the history. I will ask about the appearance of the lump. When did she first notice the lump, and what made the patient notice the lump, and what was the progression of the lump, how it has progressed. As you have told me that it has gradually increasing in size for the last 5 years. And any associated symptoms, you have told me she has dysphagia. Any Yes. symptoms? Any symptoms? I will ask regarding any symptoms of toxicity or She has uh, difficulty. She has difficulty in breathing while lying flat, okay. and Okay, so uh, he's also having pressure symptoms. I will ask rest of the pressure symptoms like dysphagia or any other pressure symptom, and I will also ask symptoms of hyper and hypothyroidism, like okay. How would you investigate? What investigation would you like to have? okay, after taking history and a thorough examination, I would like to do lab investigation and radiological investigation. In lab investigation, I will send her thyroid profile T3, T4, TSH along with baseline investigations. And in radiologically, I will request for an ultrasound of the thyroid to Okay, see. his thyroid, her thyroid function tests are normal. She is euthyroid, and ultrasound reveals multinodular goiter with dominant nodule on right side. Okay, so this multinodular goiter, I would like to request for an fine needle aspiration and cytology of the dominant nodule. And I would like to know the result of the FNAC. And I will also like to, FNAC result. FNAC result revealed Thai 3. okay, so Thai 3 is follicular. That the result is follicular aspirate. So in Yes. follicular, we have to, it's a multinodular goiter. So I would counsel the patient first for that she needs surgery. She needs surgery, and I would counsel her for total thyroidectomy. And I would like to do her anesthesia assessment by a senior anesthetist, and I would like to do investigations for her anesthesia fitness, like all the radiological chest X-ray and blood baseline investigations of the blood thyroid profile. I would like to send calcium levels. I would like to do a indirect request for an indirect laryngoscopy to see our vocal cords before surgery, and I would like to her to be assessed by an anesthetist, and I Okay. would. How would you perform total thyroidectomy? So after when the patient will be anesthetized and draped, I will first adjust the table position for thyroid, that is anti-Trendelenburg, and a sandbag placed in the interscapular region, arms by the side, and head on a ring to stabilize the head. Head will be placed on a ring. So we will drape the patient from her lower lip to the chest to the breast, and then we will start the surgery. We will give an incision about 2 to 3 centimeter above the suprasternal notch, Okay. or How would you identify a recurrent laryngeal nerve during surgery? How will you so protect the recurrent laryngeal nerve? nerve runs in the tracheoesophageal groove. The landmarks are, I would like to identify first by identifying the inferior thyroid artery. It runs in close proximity and almost at right angle to the inferior thyroid artery. Secondly,
I would like to see the lateralmost projection of thyroid gland that is called tubercle of Zucker-Kendall, which just lies in vicinity of the nerve. And there is a toothpaste sign that it looks like a toothpaste, the nerve itself. It has fine toothpaste-like lines running over it. So, and there is also another triangle, I'm forgetting his name, in which it lies, it makes one of the boundaries of the triangle, the other boundaries being the carotid vessels and the inferior thyroid artery. Okay, post-operatively, you did total thyroidectomy and patient anesthetist tells you that she has got bilateral recurrent laryngeal nerve injury. Her vocal cords are not moving. What would you do now? So first, I will see that whether she is tolerating extubation or not. If on extubation her sats start falling, then I will discuss this with the anesthetist, and we may resort to tracheostomy for to manage to initially manage this bilateral recurrent laryngeal nerve palsy. And if she's tolerating extubation and she's breathing on her own, then we will closely monitor her with oxygen inhalation and closely monitoring her oxygen saturation and breathing. And likewise, then as she stabilizes, then we will request my ENT colleague to do an indirect laryngoscopy to assess the vocal cords function. And then we will call a multidisciplinary team meeting according to all the findings, and then we will discuss regarding patients' further management. Okay, okay. So on third post-operative day, she start developing tingling of her uh, hands, and she is complaining of numbness of her hands. Her serum calcium has decreased. How would you like to manage this hypocalcemia? So likely she, as you have told that there may be an injury to parathyroid gland, and she has suffered this hypocalcemia. I would like to start her with calcium gluconate, 10%, 10 ml in 100 ml of diluted in 100 ml, and it would be given over 20 minutes slowly. And I will give this calcium gluconate in BD or TDS dose and keep monitoring serum calcium levels daily. As the calcium levels will be stabilized, then she will be shifted to oral calcium supplements like Calsan, TDS for maybe 2 to 4 weeks. And Okay, thank you very much. Thank you very much. thank you. So what are the weaknesses and what are the mistakes? Sir Shwakat, Mhm. From the time. you have done good approach. You have gone systematically, and you have correctly identified that she had a multinodular goiter, and she had been I presented to you with two complications and intraoperative injury to recurrent laryngeal nerve. I would like to add that in identify like that was a Boref triangle, Bohr triangle, that P, which Beer triangle? triangle. Beer triangle. Bear triangle, Beer, beer, Bear Bear beer. ठीक. with boundaries of internal carotid artery and superior inferior thyroid artery and common carotid artery and recurrent laryngeal nerve. You can Oh, also use nerve stimulator to identify recurrent laryngeal nerve intraoperatively. You hmm. uh, you have correctly enumerated that this runs in tracheo-esophageal groove in close proximity to tubercle of Zucker-Kendall, and you can also use and in order to prevent the injury to recurrent laryngeal nerve, one need to be careful while using energy devices. Hmm. Always use bipolar device while dissecting near nerve. So it was a good case. You have correctly identified hypocalcemia, its management, and multinodal goiter. Thank you very much. हाँ जी, शौकत भाई.
इसमें इसमें सर ये टू बिगिन विद, जिस तरह इन्होंने कहा था ना, आपने एफएनएस कराई थी डोमिनेंट नड्यूल की, डोमिनेंट नड्यूल. So why only the dominant nodule? So it could be the other nodule, they may be harboring the malignancy. So ultrasound is the best investigator that will help you to guide. So what are the ultrasonic features of the malignancies? तो जिसमें आपको सस्पिशन है, इट्स नॉट दैट कि डोमिनेंट नड्यूल इसके अंदर ही malignancy हो सकता है, दूसरा नड्यूल पड़ा हो. वो अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी से पूछेंगे कि उसमें कोई रिपोर्ट पर देखेंगे और भी कोई नड्यूल तो नहीं है, ऐसे कुछ सस्पिशियस नड्यूल तो नहीं है. इसमें तीन उसको कैटेगराइज करते हैं, लो, इंटरमीडिएट और जो लिग्नेंसी की सस्पिशन के हवाले से ना, तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं. तो वो जो अल्ट्रासाउंड पे जिसके सस्पिशन आ रही है, वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी उस नड्यूल की भी होनी है. इट्स नॉट ओनली द डोमिनेंट नड्यूल. नंबर वन. नंबर टू, जिसने कहा था डिस्निया इसको होता है वाइल लाइंग फ्लैट. अब हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन. तो आप इसमें, मेरा ख्याल था, आई थॉट के तो एग्जामिनेशन में देख लेते कि आई वुड लाइक टू सी व्हाट इज द इंफीरियर लिमिट ऑफ दिस ग्लैंड, इज देयर एनी रिट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन और नॉट. दूसरा सर ये था, आप कहा यस, बायलैटरल वोकल कार्ड पॉलिसी, जो उसमें इन्होंने सिनेरियो खुद ही दे रही है. अदरवाइज ये बेहतर था कि ये कहते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट हैड डेवलप्ड दिस, पेशेंट हैज डेवलप्ड डिस्निया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. तो फिर आपको उसमें से लेके जाते कि आप किस तरफ उसको एल्गोरिदम में लेके जाते कि किस तरफ डायग्नोसिस बनाते. एनीवे, बायलैटरल वोकल कार्ड पॉलिसी जो हो गई है, बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल, तो उसमें क्या वोकल कार्ड दोनों अपने पैरामीडियन पोजीशन में आ जाते हैं. ठीक है. जब वो तो एयरवे आपका रिड्यूस होएगा 2 to 3 मिलीमीटर तक रह जाता है. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है पेशेंट को ना. तो उसमें जब इंस्पिरेशन करेगा ना, तो वो बिल्कुल जो है थोड़ा सा है, वो भी ओपनिंग है, वो भी बंद होने का बिल्कुल हो जाता है. उसमें इनिशियल जो मैन्यूवर होता है ना, वो तो हाई प्रेशर जो ना ऑक्सीजन देते हैं एम्बू बैग से ना, हाई प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर जो वेंटिलेशन होती है, ताकि उससे इंस्पिरेशन के वक्त वो जो ना वोकल कार्ड थोड़ा सा तो गिव वे मिले, ताकि एयर तो जाए ना. फिर नेक्स्ट उसके इंट्यूबेशन, जो एक्सपीरियंस एस्थेटिस है, फिर आपको ट्रिक्योस्मी, ये हो गई. अब ट्रिक्योस्मी उसके व्हाट द नेक्स्ट, अब पेशेंट की होगी दोनों तरफ वो पैरालाइज्ड है, पैरामीडियन पोजीशन पड़े. अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट तो आप एमडीटी डिसाइड करेगी ना. एमडीटी क्या डिसाइड करेगी? क्योंकि इसमें तो पहले तो वेट एंड सी करते हैं, न्यूरोप्रेक्सिया अगर हो तो. ओके, न्यूरोप्रेक्सिया बायलैटरल साइड पे, ओके फाइन. और फिर उसके बाद इसमें सिर्फ उसके बाद फिर देखते हैं ना, इसका जो है स्पीच थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, बाकी चीजें. फिर उसके बाद आपने बेसिक ईएनटी जो हेड एंड नेक सर्जन, उसको भी इन्वॉल्व करना है. इसमें डिफरेंट आगे प्रोसीजर्स हैं, जिसमें क्या करते हैं. अच्छा, उसी वक्त जो है ना, जो हो गया ना, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड बायलैटरल वोकल कार्ड पॉलिसी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जो है ना वो करते हैं, कार्डाटमी करते हैं. जो वोकल कार्ड जो है ना पोस्टीरियरली ना, उसको मतलब समझे डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेजर. तो उससे क्या होता है, जो ग्लॉटिस का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, उसमें ओपनिंग बन जाती है. उससे फिर उसको हो सकता है कि आपको ये जो बाकी ट्रिक्योस्टमी की जरूरत ना पड़े. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? और ऑप्शंस हैं रेटिनाइड होते हैं, उनकी रिमूवल है. ठीक है. वो भी ये इससे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के साथ करते हैं. अगर सिंगल वोकल कार्ड की पॉलिसी हुई है, तो उसमें तो आप टेफ्लॉन इंजेक्शन होते हैं, बेसिकली उसमें एक वोकल कार्ड साइड पे गया हुआ है ना. जनरली तो दूसरी तरफ वाला भी हाइपरट्रॉफी होती है मसल्स की, और वो करीब आ जाता है. ना हो रही हो तो फिर उस टेफ्लॉन इंजेक्शन है वो देते हैं वो कार्ड के अंदर, या मीडियलाइजेशन होती है, रेटिनाइड को अंदर की तरफ ले आते हैं. तो ये प्रोसीजर्स हैं जो कि जो ईएनटी वाले जो उनको मतलब हमारा क्या एटलीस्ट पता हो. ऑब्वियसली उसको तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के भेजेंगे, फिर आगे जो कंसर्न उनके उनको रेफर करेंगे. अम, ये था मेरे ख्याल से. मैं एक आपको ऐड कर देता हूँ. दूसरा हाइपोकैल्सीमिया का था, कि हाइपोकैल्सीमिया वैसे भी पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव ना, आप जो हाई रिस्क जैसा टोटल थायरॉइडेक्टमी हुई थी, तो फर्स्ट डे से ही ना, एक तो पहले आपने कैल्शियम कराया, तो फर्स्ट डे भी करा लेते हैं, उनको दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं. अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितना हो, तो उसमें हाई रिस्क है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया, और पेशेंट को भी एजुकेट करते हैं, दीज आर द साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. ठीक है. और जब पेशेंट, जैसे आपने क्या, यू स्टार्टेड विद कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने दिया इनिशियली इंट्रावीनस, सिम्प्टोमेटिक है. और फिर उसको देन यू स्विच टू द कैल्शियम और विद विटामिन डी एंड बोन वन, उसके साथ आपने उसको कर लिया, स्विच किया. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो ये टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, बिकॉज ऑफ द आपकी ब्लड सप्लाई की वजह, पैराथायराइड रिमूव नहीं हुए हुए, तो फिर तो ये रिकवर हो जाएगा. तो नहीं तो फिर परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म पे फिर लाइफ लॉन्ग उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी. हाँ, अच्छा एक चीज और थी, सर, रिकरेंट लेंजन की आइडेंटिफिकेशन.
जो आपने बिल्कुल ठीक है राइटली आइडेंटिफाइड किया जी, आपका एक तो नर्व स्टिमुलेटर होते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ ही उसके अंदर होता है इलेक्ट्रोड होता है, जो वोकल कॉर्ड की बेसिक मोबिलिटी को चेक करता है। और स्टिमुलेटर आपके पास होता है, जो पर ऑपरेटिव वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करके पहले देख लेते हैं कि आपके वोकल कॉर्ड मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जो है ना, ये तो इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग है और कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग भी होती है। एक तो ये होगी। ट्रेकियोएसोफेजियल ग्रुप भी बिहेवियर ट्रायंगल है, रिक्रोलेंजियन नर्व, नीचे इंफीरियर थायराइड आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड जो है। ठीक हो गया। और जनरली मोस्ट ऑफ द 70% में ये नर्व जो है ना पोस्टीरियर टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है। और सबसे पहले क्या करते हैं, लैंडमार्क इंफीरियर थायराइड आर्टरी को आइडेंटिफाई, दिस इज द लैटरल अप्रोच, और वहीं पे ये नर्व पड़ी होगी। ठीक है। दूसरा होता है स्पीरियर अप्रोच होती है। स्पीरियर अप्रोच क्या होती है, ऊपर से आप आते हैं। जो इंफीरियर जो जीनू है ना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज या जुकर कैंडल वाला जो एरिया है, उसके विद इन 1 सेंटीमीटर वहां भी पड़ी होती है। क्रिकोथायराइड व जंक्शन वहां से ट्रेस करें तो वहां से भी आप ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं। तो ठीक है। ये इसके हैं डिफरेंट जो उसको जो लैंडमार्क्स जो है ना। बाकी तो आपने टूथपिक साइन किया, बैरी लिगामेंट के ऊपर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वहां पे ये एट रिस्क होगी डैमेज के। फिर उसके बाद जब सुपीरियर पोल को मोबिलाइज करते हैं, प्रीकाइड कार्टिलेज से नीचे नहीं आना, क्योंकि उससे नीचे फिर रिकरेंट जो शुरू हो जाती है। नॉर्मली हम पहले ये स्टेप करते हैं ना, सुपीरियर पोल को मोबिलाइज करते हैं, तो फिर उसको मोबिलाइज करते हुए नीचे तक नहीं ले आना, तो क्रीकाइड कार्टिलेज उसके ऊपर रुक जाना है। फिर आप लेटरल उसकी डिसेक्शन करेंगे और फिर उसको आइडेंटिफाई करके फिर इस तरफ आएंगे। अगर ऊपर वाली नर्व इंजर हो जाए उससे क्या होगा? हाँ, मतलब उस ऊपर वाली नर्व बचाएंगे किस तरीके से, पहले तो आप है ना पोल को ना आप रिट्रैक्ट करेंगे लेटरली, पोल को, सुपीरियर पोल को। ठीक है। और जो थायराइड कार्टिलेज मीडियल है तो स्पेस आपने बनानी है, क्योंकि जो इसके जो रूट है ना एक्सटर्नल सुपीरियर जो इसका एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, उसकी जो रूट है ना सब वो इस तरह होता है कि एक तो है विद इन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से ऊपर है तो वो तो आपके बिल्कुल रास्ते में नहीं आती। जो 2 सेंटीमीटर के अंदर है ना वो बिल्कुल क्रिकोथायराइड जो मसल और उसके साथ जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ही अटैच होती है। बाज का पोल के अंदर भी आती है, 1/3 ऑफ द केसेस ये उसके अंदर भी, पोल के अंदर भी आ रही है। तो उसमें आपने क्या करना है, पोल को अपने स्पेस बनानी है सुपीरियर पोल और थायराइड कार्टिलेज के दरमियान। जब ये इसको सेपरेट करेंगे, स्पेस बनाएंगे, तो आपकी नर्व जो है ना वो बच बच जाएगी। हाँ, डैमेज होगी तो फिर क्या होगा, जो सिंगर्स हैं उनके अंदर उनकी जो वॉइस क्वालिटी है उसके जो वो लगाते हैं ना, राग लगाते हैं, वो इफेक्ट होगा वॉइस ना, स्पेशली जो सिंगर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। ठीक है। और सेकेंडली आपको ना यू हैव टू टाई नियर द पोल, मतलब बिल्कुल थर्ड के ऊपर रह के टाई करना है सुपीरियर पोल को। हम्म, तो फिर ही आप इसको बचा लेते हैं। और दूसरा जो सुपीरियर थायराइड सुपीरियर पोल की ब्रांचेस हैं उसको इंडिविजुअली लाइगेट करें, इंडिविजुअली लाइगेट बज, करेंगे, यस। बजाय के एन मास लाइगेट करने के। एक एक आर्टरी को लाइगेट करें तो उसमें चांसेस ऑफ डैमेजिंग सुपीरियर लेरेंजियल नर्व आर लेस। हम्म, ठीक है। तो प्रेफरेबली जो है ना एक एक आर्टरी को लाइगेट करें थोड़ा थोड़ा करके, हम्म, बिल्कुल ब्लाइंड क्लैंप पूरा पोल पे ना लगाएं, हम्म। क्योंकि उसमें चांसेस आर मोर टू डैमेज द सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। तो ठीक हो गया। ये हमारा सिनेरियो हो गया जी एक सर वो मल्टी। दरम्यान में ब्रेक हो गया था मेरा कनेक्शन। वो आप क्या कहते हैं कि जो एफएनए है वो डोमिनेंट नोड्यूल की नहीं करानी, सारे नोड्यूल्स की करानी है एफएनए? नहीं नहीं, सारे नड्यूल के नहीं, आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चेक करेंगे ना, रेडियोलॉजी नीड टू टॉक टू द रेडियोलॉजिस्ट। सस्पिशियस सस्पिशियस नोड्यूल की करानी। अल्ट्रासाउंड द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर क्लासिफाई करते हैं हम्म कि रिस्क ऑफ मिलिग्नेंसी है कि नहीं। आप उसके ऊपर वेस्कुलैरिटी के ऊपर, उसकी एक्स्ट्रा कैप्सुलर हम्म इन्वेजन, उसके ऊपर पता चलता है कि ये मिलिग्नेंट है कि नहीं है। ठीक है। तो उस हम्म अगर आपको लगता है कि जी छोटा एक 1.5 सेंटीमीटर नड्यूल पड़ा हुआ है, लेकिन वो सॉलिड नड्यूल है, मिलिग्नेंट लुकिंग है, उसकी आपने एफएनएसी नहीं कराई, जो डोमिनेंट नड्यूल की करवा ली है, उसको छोड़ दिया। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी करवानी है बेसिकली। अल्ट्रासाउंड उससे देखना है कि अल्ट्रासाउंड को जी डोमिनेंट, ये नहीं कि डोमिनेंट की लेनी है हमने, हमने अल्ट्रासाउंड में बताया जी बाकी नड्यूल्स की क्या सस्पिशन है, कोई मिलिग्नेंसी की नहीं। अगर कोई हम्म सस्पिशियस है तो उस पे उसकी भी एफएनएसी होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट अभी करें फिर। जी हाँ, सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर अभी। हमारा पूछेंगे। हाँ, सर नुमान आप एग्जामिनर हैं, किससे किससे पूछ लें? मैं मंजू कैंडिडेट हूँ, फिर मैं उस्मान से पूछ लूंगा। ठीक। ठीक है, चलें सर, सोचना ही है, मैं रोक नहीं, स्टॉप करने स्टार्ट लगा। कर। चलें फिर। स्टार्ट कर। ओके, गो अहेड। A 30 years old male patient has reported to you in OPD with a swelling in front of the neck for the last 6 months.
How will you proceed with this patient? So first of all, I would like to see whether this swelling is rising from the thyroid or not, and I will ask the patient to swallow. So does it move with the swallowing or not? Yes, it moves with the swelling. So that means a thyroid swelling. So the next step would be I will take the history and I will ask about the whether the patient this patient having any pressure symptoms, any signs of toxicity, any signs of the malignancy in this patient, and what are the comorbids and the previous history of any investigations and the treatment he has already taken. He appears emaciated with anxiety features and prominent eyes, and these are his features on Okay, his look. so he's anxious looking with emaciated and the prominent eyes. So that means these signs are suggesting toward the toxicity. But I would like to ask more questions. So whether there any history of palpitations or any preference to the cold climate or heat intolerance, and then I any insomnia, irritability. So what an examination? In examination, what would you like to see? Okay, so on examination, so again, I will proceed further because I will start off with the general physical examination. So see what is the pulse, the sweating of the palms, and just to see the signs of the toxicity and the particular eye signs in this patient. And the examination of the thyroid, I will be concentrating on the inspection, then the palpation. So I would be looking for, is it a diffuse enlargement of the thyroid, or are there nodules? What is the lower limit of the thyroid, any palpable lymph nodes, and then any signs of the malignancy, the lymph nodes are palpable or not, patient having Okay, after examination, you find nodule in the right side of in the right lobe of thyroid, which is about 5 into 6 centimeter in size, and there are he is having exophthalmos and dead lag, and there is a bruit audible on his thyroid swelling. So what will you do now? so so that means a toxic nodular goiter. So there's only one nodule. Yes, on examination there is Okay, only toxic solitary thyroid nodule. So the next step would be I will consult the patient and I will request the TSH along with the T3, T4, and the ultrasound of the neck and the thyroid so, antibodies. so TSH is markedly low and T3, T4 are elevated. And ultrasound confirms your examination findings of that nodule. It's a solid nodule in the right lobe of thyroid. Okay, so, and I would talk to the radiologist and ask about is there any suspicion of the malignancy or not, and then I will consult the patient about the diagnosis and the treatment plan. So this patient will require the surgery, but before that we will need to make this Okay. patient euthyroid. So I will How will take the you make input from the endocrinologist as well, right? Sorry. how will you make him euthyroid? So I will I will take the input from the endocrinologist as well. So we will start off with the carbimazole, carbimazole. So 40 milligram TDS. Uh, Depending on what is the pulse rate, and uh, so along with I will start off with the beta blocker as well, propranolol, 40 milligram TDS. So so the once the patient has I will reassess the patient response. So his pulse has been normalized or not, thyroid function test, they have been normalized or not. So once it's euthyroid, then we plan the surgery. So what surgery will you like to do? So in the patient is young. So in this patient, so there's only one nodule on the right side. There's no nodule on the left side. Yes, yes. And before that, during the before making a euthyroid, so I would like to have the thyroid scan as well. So see whether this nodule is actually functioning. Okay. So what surgery would you like to do? So if there's only one nodule which is active, so I would go for the total lobectomy and isthmusectomy. Okay. And what
will you counsel the patient regarding this surgery? So, okay, I will tell him about the diagnosis and the plan which we're going to for the total lobectomy and hysterectomy in this patient. So we have other options, but the radioiodine ablation. But in this patient, because the patient's having eye signs, that will be worsened with the radioiodine. So I will inform about the other option as well. But the best option would be the surgery. So I will discuss about the risk of the complications, particularly an injury to the recurrent energy and nerve and recurrence of the disease and risk of the bleeding. Okay. Okay. So you have done the surgery post-operatively. Patient comes to review after 2 weeks, and his histopath report shows papillary carcinoma. What will you do now? So I would like to see the complete report. What is the size of the papillary carcinoma? Is it well different? By Yeah. 2 centimeter. Yeah. 3 by 2 centimeter in size. 3 by 2 centimeter. Is there any extra thyroidal invasion or not? Extension and lymph nodes. I would like to review the ultrasound report of the neck again. Were there any lymph node involved or not? And what is the grade of the tumor? If it is poorly differentiated or well differentiated? Well, it's well differentiated with no lymph nodes involvement. Okay, it's a 3 into 2 centimeter. Yes. So 3 into 2 centimeter, and there are no extra thyroid. So I would get the contrast and CT scan of the neck and chest to see whether there are any other there's any other metastatic disease. So if there is no, yeah. Okay. Okay. Then what? Okay. Okay, so then after I would take the patient in the multidisciplinary. I will get the input from the oncologist. We will discuss this case in MDT, and because this patient is a young patient with a 2 to 3 centimeter lump, no extra thyroid invasion. So the most likely there are no lymph nodes are involved. So the most likely recommendation would be that lobectomy is sufficient and continue with the monitoring. With the Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. हाँ जी, जी सर. पहले तू उस्मान Sir, patient was having toxicity with nodularity. You investigated, but thyroid scan was done late. Yeah. It should be Initially शुरू बोलना में चाहिए था. ये सही था। Initially बोल देना चाहिए था scan मुझे. once you have symptoms of toxicity with solitary thyroid nodule. It was the first investigation after ultrasound and thyroid function test and thyroid function antibodies. Have you mentioned about thyroid function antibodies along with Yes. thyroid वो तो मैंने function test? बताए थे. Okay. Yes, वो तो Okay. मैंने mention किए थे, but I just forget the thyroid scan. Yes. वो बाद में मुझे याद है कि वो thyroid scan बोला. Yes. Although you later on told about the thyroid scan, because it is one of the most important investigation in a toxic patient to know whether that nodule is hyper functioning or rest of the thyroid gland is hyper functioning. And secondly, it was an unusual presentation that hyper functioning nodule is malignant as well. Because I would like to review the ultrasound report and discuss the radiologist. Is there any yes, suspicion of malignancy? Very less chance, very less chance of toxic nodule being a malignant. yes, but it was a rare case, and But my question is that once it was a large nodule, size was more than 3 centimeter. I think. What was the size? 4 or 5. 5 5 centimeter nodule. In my opinion, he should have a total thyroidectomy once cancer has been diagnosed. No. Because No. lobectomy. No. The carcinoma was 2 centimeter. Okay, cancer was 2 centimeter. Papillary carcinoma, 2 centimeter papillary carcinoma. Okay, if to less than 2 centimeter. Thyroid, the high risk features means that there were no extra thyroid spread, no metastatic disease in the neck or distant mets. Okay. And it's a well differentiated, not the poorly differentiated. Okay, then you can do with lobectomy and hysterectomy. I thought that it was a 4 centimeter or 3 centimeter tumor. Then lobectomy. This size 1 centimeter या 1.5 पे नहीं है papillary का?
जो कट ऑफ नो साइन है, कट ऑफ नहीं, इसका सर ये है जो आपने उसके बाद हाई रिस्क age बेसिकली ना। age age less than because it her age was less than 35 45. It is low risk group. And size of tumor and grade of tumor has to be low अगर आपने वो करना है तो साइज इसकी कितना, एज भी साइज की कट ऑफ क्या है? सर का साइज डिपेंड करता है। अगर हाई ग्रेड है तो 1.5 1 1 to 1.5, लो अच्छा, ग्रेड है 2.5 तक। नो नो नहीं। So indication of total thyroidectomy in case of papillary carcinoma size है sir more than 4 centimeter. There is extrathyroid spread, lymph node involvement है, distant mets है, lymphovascular invasion है, poorly differentiated है. So these are the indication for the total thyroidectomy. ठीक है। Otherwise, or size of the papillary carcinoma, it's if it's less than 1 centimeter, less than 1 centimeter. तो और कोई हाई रिस्क उसके मेट्स उसके लिम्फ नोड्स ठीक है, कोई इसमें कोई malignancy के साइन नहीं है, तो आपने कुछ नहीं करना उसका। जस्ट ऑब्जर्व करना है, फॉलो अप रखना है हाँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और फॉलिकुलर तो हर केस में टोटल है ना? हाँ हाँ जी। फॉलिकुलर का बिल्कुल बिल्कुल। और मेड्यूलरी का भी मेडुलरी का ये बिल्कुल। ये एक्सेप्शन सिर्फ इसके लिए है, पेपिलरी के लिए है। हम्म अच्छा, हाँ। और लेकिन अगर पेशेंट का कंसर्न है और यंग पेशेंट है तो यू कैन इवन डू टोटल थ्रेडेक्टमी भी कर सकते हैं, मतलब मना नहीं है फॉर मेलिग्नेंसी। हम्म लेकिन अगर यंग पेशेंट है और फॉलो अप का लॉस है तो वो जो है ना फिर आप कर भी सकते हैं टोटल थ्रेडेक्टमी। ठीक है। तो इसमें और कोई चीज कोई, ताकि हम नेक्स्ट जो लास्ट सिनेरियो पे चलते हैं फिर। हाउ वुड यू फॉलो दिस केस? व्हाट शुड बी यस। द फॉलो अप? So the follow-up will be this patient would require the clinical examination 6 monthly, along with the TSH, thyroglobulin level, along with the antibodies, thyroglobulin antibodies, and ultrasound of the neck. Initially 6 months, 6 monthly, then annually. ओके। एंड व्हाट अबाउट द थायराइड स्कैन जो इसमें करते हैं? Yeah. सो इसमें तो सिर्फ हुआ था, हमने किया था जी, only we did went for the total lobectomy with isthmusectomy. But in case of thyroglobulin is rising, the trend is it's that with the during the follow up. So then again we have to go for to see whether there are any recurrence in the neck, to get the ultrasound of the neck and along with the cervical lymph nodes. CT scan of the neck and chest to see any there are distant mets or not. ठीक है। ठीक है सर। और फिर उसके बाद फिर आपने अगर कोई है कोई लीजन है तो अगेन वी नीड टू गो फॉर द एफएनए और कंफर्म किया, फिर उसकी कंप्लीशन उसके ऊपर चले जाएंगे, फिर दैट विल बी फॉलोड बाय द रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन। ठीक है, ठीक। ठीक है। चलें आगे चलें। ओके अच्छा, एक मिनट ठहरे मैं इसको। ओके डॉक्टर उस्मान, यस। a 45-year male patient has reported to you in your clinic. He has presented with the neck swelling along with the diarrhea. So how will you proceed? Okay, first of all, I will take thorough history of from the patient regarding when did he notice the swelling? Is it increasing or decreasing? What are the symptoms? Is this causing to So he noticed the the patient? swelling 5 months back. Okay, and he is having diarrhea. So I would also ask about whether a patient has any signs of hyper or hypothyroidism, and There are no I signs would of, also yeah, there are no signs of the toxicity. okay, I will ask about the history of any radiation, any family history of No radiations. cancer, any family history of cancer, or I would also like whether he belongs to endemic area, what is the frequency of diarrhea? Because patient has, I would examine whether this swelling moves with swallowing or not. Yes, it If it moves moves, with the swallowing. then I would like to examine the swelling. What is the consistency? I would examine neck and cervical lymph nodes. I would also palpate his skull. I will auscultate his chest. I will ask about any bony pain. And then I would like to have thyroid function test. I would advise ultrasound of the neck and cervical lymph nodes and see the whether this swelling is solid or cystic, and what is the status of regional lymph nodes.
Are they palpable, or are there any suspicion? And then I would like to do FNAC of the suspicious nodule along with FN. If there are lymph nodes, I would also like to have FNAC of the lymph nodes. My clinical suspicion is, according to the history, patient has probably medullary carcinoma thyroid. I would also like to have serum calcitonin levels, carcinoembryonic antigen level, and serum calcium levels, along with thyroglobulin levels and thyroid antibodies. Okay. So FNAC shows myeloid stroma. There's a one nodule in the left side of the lobe. It is 4 into 5 centimeter. Okay. And then I would, because medullary carcinoma has a propensity for metastasis, I would plan operation for this. I would counsel the patient regarding the disease. And because most of the times these carcinomas What are surgery will you associated with, perform? Which surgery will you perform? I will perform because it is a multifocal disease, and it has propensity for blood metastasis and lymph nodes Which metastasis. surgery will So you perform? I will perform a total thyroidectomy, Total and if thyroidectomy. yes, and if there is Okay. any How? suspicion, lymph node along with central lymph node dissection level 5, level 6, and I would also do So metastatic lymph workup. node, And clinically lymph nodes are not they're not palpable. okay, if lymph nodes in level 2, 3, 4, and 5 are not palpable, then I will also only do central lymph node dissection along with thyroid. And if there is any suspicious lymph node, I will do dissect. I would also How will you how will how will preoperatively you work up perform? for preoperative workup for Mann syndrome, because these tumors are also associated with multiple endocrine neoplasia. I would like to know whether patient has pheochromocytoma or hyperparathyroidism as well. Okay, right. So so you will go for the total thyroidectomy, and how will you Yeah. perform the central lymph node dissection, central neck Uh, dissection? be- okay, because central lymph nodes are usually associated with, these are pretracheal lymph nodes, and they are associated in close proximity to the thyroid gland while doing the thyroidectomy. The central lymph nodes that are suspicious, and lymph nodes in anterior mediastinum, they will be removed along with thyroid gland. How will you, right? So you will remove all these lymph nodes, Yes, right? yes, Okay. yes. So the post-operatively, how will you follow the patient? I will post-operatively, I will pre-operatively, I will have baseline serum calcitonin levels and carcinoembryonic antigen and calcium levels. Post-operatively, I will call the patient and get calcitonin and carcinoembryonic antigen. I would also get ultrasound 6 month physical examination every 3 months, and ultrasound examination for first 2 years, ultrasound of neck and lymph nodes. Uh, every 6 months for first 2 years, and then yearly. And I would also, because these tumors are not radio sensitive, there is no role of post-operative radioactive iodine therapy. I will give patient post-operatively, because patient is undergone total thyroidectomy. I will give him lifelong thyroxine therapy, and I will continue to monitor the tumor markers and ultrasound neck every 6 monthly Hmm. for So 5 years. okay, so in addition to these, anything which you like to share with the patient? I would, because these cancers have familial disposition, I will also get genetic counseling or genetic workup of the patient to know whether is it sporadic or genetic. If it is genetic, I would counsel uh, for the genetic uh, evolution of his rest of his family for Okay, men syndromes. okay, thank you, Dr. Usman. Thank- आप इसमें you went very well. लेकिन सिर्फ एक मेरी इसमें है जो सजेशन है कि आप ना एग्जामिनर के क्लू जो ना पिक किया करें कि कहाँ पे एक ही गो में सब कुछ नहीं बोल देना, ठीक ठीक है ना? तो आप उससे भी हो सकता है मैं आपको रिट्रैक करने की करूं कि नहीं इधर नहीं मैंने किसी को तरफ इतनी आपने बताई अब दूसरी तरफ मैं ले लूं, मैंने और फाइंडिंग अपने पर रखी, ठीक सही है? तो ये है कि थोड़ा पीसेस में जो ना उसको करके ना थोड़ा सा सही उससे है पूछते हैं, अच्छा जी जो आपने अभी पूछा हिस्ट्री में पूछा तो थोड़ा उस कंफर्म कर लें ताकि आपको पता है जी कि उस पर ट्रैक पे ही है।
इसमें जो मोस्ट एक चीज थी कि एमडीटी का जिक्र करना, आई थिंक हाँ वो मेरे अदरवाइज यू यस आपने सारी चीजों को ऑस्ट्रेट कवर कर ली। यू टॉक अबाउट द मैन हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, वो भी आपने वो कर लिया, मैन 2B और 2A एंड 2B दोनों को आपने उसको भी कर लिया कि उसको भी वर्कअप अप करवाएंगे। ट्यूमर मार्कर्स का यू टॉक अबाउट, उसमें जो लिम्फ नोड जो नेक डाइसेक्शन है, इसमें इवन द नेक इज नेगेटिव, लिम्फ नोड्स आर नेगेटिव क्लिनिकली, इसमें इलेक्टिव सेंटर नेक डाइसेक्शन है, ठीक है। तो बेशक वो नहीं भी है, फिर भी इसमें है, बाकियों में नहीं है। पेपिलरी कार्सिनोमा में हाँ इलेक्टिव जी जो है ना वो डिसेक्शन नहीं है। हाँ, प्रूवन होगा तो उसकी डिसेक्शन है, इलेक्टिव लेटरल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ जी सेंट्रल जो डिसेक्शन है वो भी करते हैं अगर क्लिनिकली हो या अल्ट्रासाउंड प्रूवन पॉजिटिव लिम्फ नोड हो, उसमें करते हैं, सही ठीक है। क्योंकि उसकी अपनी फिर मोबिलिटी, पैराथायराइड की जी सर ब्लड सप्लाई उसको कंप्रोमाइज होने के बाद में हाइपोपैराथायरिज्म में जाने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो और कोई चीज सर आपको ऐड करना चाहिए इसमें? मेडुलरी में क्या फैमिली की कोई स्क्रीनिंग करती है, फैमिली की हाँ मतलब बिल्कुल, बाकी फैमिली? उसमें सर ये जी है ना सर फैमिली का देखना है हिस्ट्री, और इसमें तो फिर अगर फेमिलियल है उसमें इन्फेंसी में ही टोटल 5 साल से थायराइड पहले रिकमेंड, हाँ कि उसमें अगर आप एक इन्फेंसी बंदे को डायग्नोज हो गया तो उसकी पूरी फैमिली को, फिर उसके फैमिली को देखना है, अगर एक बंदे को डायग्नोज हो गया तो? डायग्नोज हुआ है ना सर, अगर तो फेमिलियल है, जेनेटिक तो जेनेटिक टेस्टिंग ऑफर करते हैं, और फिर उसके बाकी जो सिबलिंग्स हैं उनकी भी फिर स्क्रीनिंग उस पे कैल्सिटोनिन के साथ भी उसका फॉलो अप है, ठीक है। एक तो है कि कराएं, दूसरा है कैल्सिटोनिन के साथ फॉलो अप करते जाते हैं। तो अगर जब रेल इसमें सर क्लियर हो जाएगी, ज्यादातर तो स्पोरेडिक ही होते हैं, लेकिन 25% जो है ना ये होते हैं फेमिलियल ना। हाँ। तो फेमिलियल में फिर आपने अब फैमिली मैंने किसको? अब मैंने डायग्नोसिस क्लियर कर दिया था, मैंने डायरिया बोल दिया था ना स्टार्ट पे ही, तो जी वो सर क्लियर कट हो गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटलरी। अगर सिंपल मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट स्वेलिंग है, तो उसके अंदर फिर नेक्स्ट जो आएगी ना, फर्स्ट एग्जाम्पल डायरिया आप नहीं बोला कि जी आप हिस्ट्री में नहीं मेंशन नहीं हम्म किया, तो एक क्लू आएगा कि एफएनएसी रिपोर्ट आई, हो सकता है वो उस वक्त आपको स्पेसिफिकली अमाइलॉइड बोलता है, नहीं बोलता एग्जामिनर। अगर हम्म शुरू में फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नेक्स्ट स्वेलिंग इज अ पेशेंट प्रेजेंट विद नेक्स्ट स्वेलिंग, अब हम्म नेक्स्ट स्वेलिंग है, तो अब वो हो सकता है ये पता नहीं किधर जाएगा। मैंने डायरिया तो नहीं बोला, डायरिया बोलने के हम्म, साथ ही मैंने डायग्नोसिस क्लियर कर दिया ना। हाँ जी। और तो दूसरा वो सर उस ये वक्त मुझे बताएं कि ये किसी से पूछा है कि आपने, ये तो हम थायराइड को कर रहे हैं ना, बाकी नेक्स्ट स्वेलिंग है जिसमें जो है ना कैरोटिड बॉडी ट्यूमर और ये चीजें ये पूछते हैं वाइवे में आएंगी या नहीं आएंगी जनरल यार सर्जरी के? ये जो बाकी जो ब्रेकियल मैंने सिस्ट, ब्रेकियल सिस्ट हो गई, हम्म, उसके बाद ये ये थायरोग्लॉसल सिस्ट हो गई, उसके बाद ये था थायरोग्लॉसिस तो में आ सकती है, क्योंकि ये हमारी डोमेन में भी उस तरह नेक स्वेलिंग जो है ना, अब इसका मुझे एग्जैक्ट ये दूसरे बता सकते हैं जिन्होंने वाइवा अपीयर हुए हैं ना, तो पहले तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने तो ऐसा बाकी स्वेलिंग का कोई और ये पैरोटिड और ये चीजें पैरोटिड और सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स और नोटेड मेरा है क्लियरली उनके पास ही, हेड एंड नेक वालों के पास है। जो अच्छा चीजें जनरल ठीक। सर्जन के डोमेन में ना वही पूछेंगे। हम्म यहाँ और पे स्किन जो तो नहीं है हमारे, स्किन के ट्यूमर तो नहीं है ना, स्किन स्किन वाले? स्किन का वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये भी मैं इसलिए कहा था बीच में सर मिजान इनको मतलब कभी आ जाए ना, तो हम्म उनसे बंदा पूछता तो फिर हमें कोई क्लियर हो और भी जो है ना। हम्म लेकिन यहाँ पे हम्म प्योरली जो जनरल सर्जरी का स्टाफ है ना वही पूछा जाएगा। लिम्फ नोड्स तो हो सकती हैं, वैसे लिम्फ नोड्स आ सकती हाँ, हैं। अच्छा यही हम्म यही स्वेल यही लंप मैं इस तरह बनाता जी, उसके लंप इज नॉट मूविंग विद द स्वॉल्विंग, हम्म तो फिर है फिर ना, तो बहुत फिर हाँ नहीं, फिर आपको फिर अपने दूसरा डिफरेंशियल जो नेक्स्ट स्वेलिंग के उसमें आ जाएगा, तो पेशेंट आ भी सकता है पेपिलरी हाँ कार्सिनोमा का आपका नेक के नेक्स्ट लंप के साथ प्रेजेंट किया पेशेंट ने, इसी तरह सिर्फ लिम्फ लिम्फ नोड नोड के पल्पेबल साथ। है, थायराइड पल्पेबल नहीं है। हाँ बिल्कुल ना, तो लिम्फ नोड आपके हम्म पैल्पेबल है, और हम्म। उसमें जो प्राइमरी पड़ा वो थायराइड के अंदर पड़ा हुआ, लेकिन प्राइमरी उसकी पैल्पेबल नहीं है। तो या आपको इवन तो अगर लिम्फोमा, लिम्फोमा आ सकता है हाँ, डायग्नोसिस के लिए, तो आ तो सकता है ना। लिम्फ नोड की बेसिकली तो लिम्फ नोड जो है ना, लिम्फ नोड बायोप्सी तो जेनोसाइड जो उसके है ना डोमेन में ना, हम्म तो इस तरह करके प्रेजेंटेशन हो सकती है, हम्म। ठीक है। तो चले, मेरा ख्याल आज का दिन हमने ये कर लिया, ठीक है। सर कल फिर यूं करते हैं कि एक अब